Good morning, children. Welcome to your GK class. Today we will learn about seasons. Okay, what will we learn about? We will learn about seasons. Now, in front of you, in front of your screen, you can see there are 4 seasons. Okay, this is winter, spring, summer, and autumn. We will study about winter, summer, and autumn. Autumn is nothing but the rainy season. Okay, children. Now, see seasons in India. Now, spring, summer, monsoon, autumn, pre-winter, and winter. But what will we study? We will study 3 important seasons. These seasons. We will study first about the 3 important seasons. Those are summer, monsoon, and winter. The rest are the रिलेटिव यानी ये दोनों बीच में ही आ जाएंगे. समर और मानसून के बीच में, मानसून और विंटर के बीच में, विंटर एंड समर के बीच में. ओके चिल्ड्रन, सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोज आर समर, मानसून एंड विंटर. ओके, yes, so there are how many seasons? If you see, there are 6 seasons: spring, summer, monsoon, autumn, pre-winter, and winter. But the most important 3 important seasons in our India are summer, monsoon, and winter. Okay, children? Yes. Now we will now learn about little more about these seasons. Okay. Now look here. Ignore this and just look here. In winter season, trees shed their leaves. क्यों? क्योंकि ठंड होती है, सारे बर्फ गिर जाती है. Yes? Yes. And in spring season, flowers starts to bloom. Okay? So flowers, हर जगह आपको flowers ही flowers दिखते हैं. Yes or no? This is a spring season. And then in summer season also, fruit start growing. And autumn में क्या होता है? New leaves start coming. Okay? Yes. Now children, we will read about summer season. April and May are the hot months of the year. This period is called the summer season. The sun is at its hottest and brightest during this time. People like to stay indoors and use fan, coolers or air conditioners. People like to have cold water, cold drinks and ice cream. Now children, you can very well see summer season is the hot months. Okay, so we feel hot in April, May, and you also feel hot in June also, which is why you have vacations. Yes, people do not like to go out in summer. Yes or no? इसीलिए आपको summer vacation होती है, so that you do not have to come to school because it is very hot और लोगों को घर में रहना अच्छा लगता है. Yes or no? And then what do people eat? People eat ice creams. People like to drink cold water. Yes or no? Yes, children. So this is summer season. Now children, now what are the clothes which we normally wear during summer? Okay, so we wear socks, purse, flip-flops, sandals, sunglasses. Yes, then we wear caps also. Yes, then we wear skirts also. Yes or no? Yes. Now see, just look here children. Summer is a very hot month. Yes or no? Summer season is very hot. Sun shines very bright and it is very sunny. So you keep on feeling thirsty. आपको बार बार प्यास लगेगी. Yes or no? And during summer we drink lots and lots of water. Yes? Yes. We drink lots and lots of water. And we wear cotton clothes in summer. हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. हम क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स? बिकॉज कॉटन क्लोथ हेल्प अस टू कीप cold. Yes, it helps us, not cold, but it helps us to, so that we do not feel warm. It helps us to absorb heat. Okay, yes, and people eat lots of ice cream, and when we go to
in the park, mother makes us to wear caps so that we do not catch heat. Yes or no, children? Yes. So look here, summer, bright, sunny and hot. You can see sun shining very brightly. Now see, here children are playing in the park with wearing a cap. See, I can play in the park. Mummy makes me wear a cap. Then see, I feel thirsty and I drink lots of water. Yes or no? Yes, you drink lots of water during summer. Then you see, I also drink juice and I also drink juice. Yes, yes, we drink juice also because we feel very refreshed, and we also eat ice creams. Now, we should wear cotton clothes in summer. Okay, जाके हमें गर्मी नहीं लगे. Okay, here then I also love to go to beach, but in the morning or in the evening. Yani we should go out in the beach, in the garden, but only early in the morning or in the evening. We should not go in afternoon. Because why? Because it is very hot in afternoon. We should not go in afternoon. We should go in the morning or in the evening. Okay, children? Yes. Now, let's see what is next. Now, children, during summer season, we should take care of ourselves. अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपना तो हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे. Yes or no? So we should take our very good care of ourselves during summer season. Why? Because sun is very bright. And अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप बीमार हो जाओगे. If you do not take care of yourself, what will you become? You will become ill. Yes or no? You will become weak. Now see what is happening here. Now see, what should we avoid? Tea, coffee, spicy and salty food. Why? Because you start feeling thirsty. जब आप टी पीते हो, कॉफ़ी पीते हो या सॉल्टी फूड्स खाते हो जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तो आपको बार बार प्यास लगेगी. यस और नो? आपका बॉडी जो है वो पानी इवेपोरेट कर लेगा एंड देन आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. डिहाइड्रेशन मीन्स योर बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ वाटर. और जब आपके पास इनफ ऑफ वाटर नहीं होगा इन योर बॉडी, यू विल स्टार्ट फेंटिंग, यू विल फील वीक. ओके, नाउ so look here, you should avoid tea, coffee, spicy foods. Okay, now read the next. Rest, you should take rest. Okay, you should sleep, or yes, you should get enough of sleep. आपको सोना चाहिए at least for 8 hours so that you feel refreshed and you do not feel tired. So आपको अच्छे से सोना चाहिए. अगर आप नहीं सोएंगे अच्छे से तो आप वीक फील करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो वी शुड टेक केयर एंड वी शुड स्लीप ऑल्सो. देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड ईट cold foods. Cold foods यानी you should not eat ice because it is cold. You should eat cold foods like salad, yes, and fruits because they contain lots and lots of water. Yes, yes. For an example, cucumber, watermelon. These types of food help us to beat the summer heat. Yes or no? Yes. So we should eat such types of food like cucumber, watermelon. Yes? Yes. Then children, so we should enjoy such food. Then what we have to do? We should always try to be in शेड, यानी हम डायरेक्ट धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में जाने से हमें बचना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जब हम जा रहे हैं तो हमें किसी शेड में खड़ा रहना चाहिए. यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, यू शुड वेयर अ कैप. ओके, यस. क्यों? इससे आपकी बॉडी की हीट ट्रांसफर नहीं होगी, आपको धूप नहीं लगेगी. यस और नो? यस. सो वी शुड ऑलवेज वेयर अ हैट और वी शुड टेक एन अम्ब्रेला व्हेन वी आर गोइंग out in the heat or in the sun. Okay, now read the next point. Soak means you should take a cool shower of bath to help you cool down when you feel hot. फिर जब आपको गर्मी लगेगी या when you start feeling hot, you should take a bath. You should take a bath with
cold water, okay, so that your body feels relaxed. Yes or no? Yes. Then children, what should you do? Then you should wear light weight and light colored loose fitting clothes made from natural fibers like cotton or linen. You should wear cotton clothes, that too light colors. Light colors कैसे होते हैं? वो आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं. They help your body to keep cool. Cotton clothes helps to cool down your body. So we should wear lightweight, light colored and loose fitted. यानी आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन कपड़े पहनने चाहिए. कॉटन कपड़े क्यों पहनने चाहिए हमें? सो दैट our body is relaxed and it helps our body to cool down. Okay, now see, ये हो गया dress down. Then be cool. Make use of fan and conditioner to set to cool. यानी you should always use fan or air condition during summer season. Yes, so that you feel cool. Then you should always drink water. कहाँ पर भी जाए आपको अपनी एक पानी की बोतल लेके जाना चाहिए. Yes or no? So that you can drink water. Yes. So how will you beat the heat? You will avoid tea, coffee and salty food so that आपको आपकी बॉडी में से पानी ना जाए. Then you will take rest. You will enjoy foods which are cold. For example, cucumber and watermelon. Then whenever you go out, you will wear a cap or take an umbrella. Then when you feel hot, what will you do? You will take a bath with cold water or cool water. Cool water, yes or no? Yes, cold shower or cool shower. Then you should wear light weighted, light colored and loose fitted cotton clothes. Yes, so that you feel cool. And such clothes like cotton helps to cool down your body. We should make use of air conditioners, fan and coolers also. Yes, yes. And then we should always drink lots and lots of water. Okay, children? Now, children, after this, we will learn about rainy season. Okay, so you can see this is the beautiful scenery of a rainy season. Can you see? Yes. What can you see? You can see dark clouds. Yes, and raindrops falling from the sky, and a boy carrying an umbrella. Yes, this is the scenery of a rainy season. Yes or no? Do you all like rainy season? Do you enjoy rainy season? Yes, we all enjoy rainy season. Yes, yes. Okay, so we all enjoy rainy season. Now children, what are the clothes we wear during rainy season? Now you can see here the gloves, raincoat, boots, umbrella and hat. These all things we use in rainy season to help us to protect from rain. Yes or no? Yes children. हमें ये सब रेनी सीजन में यूज़ करना चाहिए जाके हम रेन से बच सके. यस और नो? वरना आप क्या हो जाओगे? आप भीग जाओगे और आप जब भीग जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे. यस और नो? यस. So these things we use in rainy season to protect ourselves from the rain. These are gloves, raincoat, boots, umbrella, hat. Okay? Yes. Then children, now let us see what is happening here. Okay? Rainy season. After the hot summer comes the rainy season or monsoon season. The rain comes in June, July and August. Cool winds from the sea brings the rain cloud. We use raincoat and umbrellas to protect ourselves from the rain. The rain fills the dried ponds, wells, lake and rivers. It brings water for the crops. The trees and the plants look green during the monsoon season. Now children, you can look here. What happens after hot summer? जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो उसके बाद कौन सा सीजन आता है? The rainy season. Okay. And जो सी होती है, सी हमें कोल्ड विंड्स देती है फ्रॉम दी सी एंड फिर वो रेन क्लाउड्स बनाती है.
फिर उसके बाद क्या होता है, वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हम रेन कोट एंड अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन। रेन क्या करता है, रेन जो है ड्राइड पॉन्ड्स यानी जो पॉन्ड्स है उनको फिल कर देता है वाटर से। जब बारिश आता है तो ये पूरा पानी से फिल हो जाता है। यस और नो? यस चिल्ड्रन, वेट। What happens when rain comes? Rain fills, suppose this is a pond. तो गर्मी में सारा जो सन है वो वाटर इवेपोरेट कर लेता है, सोख लेता है। तो जब रेन आता है तो वो सारे पॉन्ड्स को फिल कर देता है। यस यस, इट फिल्स द लेक एज वेल एज वेल। वेल जो होता है उसमें भी पानी वो फिल कर देता है। यस और नो? देन व्हाट हैपन्स, इट ऑल्सो फिल्स द रिवर। यस यस, वो रिवर में भी पानी भर देता है। यस और नो? यस, सो रिवर में भी पानी आने लग जाता है। देन व्हाट हैपेंस इन रेन? रेन ऑल्सो ब्रिंग वाटर फॉर द क्रॉप्स, यानी जो प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, वो रेनी सीजन में अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन लगते हैं। यस और नो? यस, वाई? बिकॉज रेन उनको बहुत सारा पानी दे देता है, सो दे बिकम green in monsoon season, which is why monsoon is very important. Yes or no children? Yes, monsoon is very important. So again we will read this. Rainy season. After the hot summer comes the rainy season or monsoon season. The rain comes in July, June and August. Cool winds from the sea brings the rain cloud. We use raincoats and umbrella to protect ourselves from rain. The rain fills the dried ponds, wells, lakes, rivers. It brings water for the crops. The trees and plants look green during the monsoon season. Yes, children? Yes. Now again you can see the different items we use during monsoon season. Yes, yes, the raincoat, the umbrellas, cap, gum boots. Yes, yes. Take a look. Now children, I hope you have seen this. We use umbrella, raincoat, gum boots, caps in rainy season. Now children, during rainy season we should take care of ourselves. हमें खुद का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। Yes or no? So that we do not become ill. Okay? तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए रेनी सीजन में? कीप अ सराउंडिंग क्लीन, यानी हमें हमारा आसपास का, हमारा घर और हमारे आसपास का जो एरिया है उसे साफ रखना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। वाई? If we keep our surrounding and our home clean, it helps us to protect against infection and flu, यानी बहुत सारी बीमारियों से हमें मदद करता है। यस और नो? यस, तो हमें हमारी सारी सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए। यस यस। देन चिल्ड्रन, व्हाट शुड वी डू हियर? सबसे पहले वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। देन चिल्ड्रन, व्हाट शुड यू डू? यू शुड ऑलवेज वॉश हैंड्स। जब भी आप बाहर से कहीं आओ तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए, लेग्स भी वॉश करने चाहिए। देन व्हेन यू ईट, बिफोर यू ईट, यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। जो खाने से पहले आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आप जर्म्स से प्रोटेक्ट होते हो। आपके हाथ में जो जर्म्स है अगर आप खा लोगे तो वो जर्म्स भी आपके मुंह में चले जाएंगे। यस और नो? यस, जब आप हैंड वॉश कर दोगे तो वो जर्म्स पानी में बह जाएंगे, आपके मुंह में नहीं जाएंगे। सो वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स। देन व्हाट शुड यू डू? अवॉइड स्ट्रीट वेंडर्स, यानी हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वाई? अनकवर्ड फूड, जो फूड जो है जिसे ढका नहीं गया है, जिसे कवर नहीं किया है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को, और फ्लाइज क्या करते हैं, उसे कंटामिनेट कर देते हैं, यानी उसे गंदा कर देते हैं। और जब आप ऐसा गंदा खाना खाते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो। यस और नो? यस। देन यू शुड गेट rid ऑफ
स्टैग्नेंट वाटर, यानी जहाँ पानी जमा हो जाए आपको उसे खाली कर देना चाहिए, आपको उसे सुखा देना चाहिए या पानी कहीं पर भी जमा होने नहीं देना चाहिए। क्यों? स्टैंडिंग वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी इंसेक्ट्स, यानी जब पानी कहीं जमा हो जाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट उसमें पैदा हो जाते हैं और फिर वो आपको काटते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैला देते हैं। ओके, सो यू शुड नेवर लेट वाटर कलेक्ट। ओके, देन यू शुड यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो पानी बहुत सारा जमा हो जाता है और पानी में क्या पैदा होता है? मॉस्किटो। ठीक है, और मॉस्किटो कौन कौन सी बीमारी देता है? डेंगू, मलेरिया, यस और नो? यस, so we should always use mosquito repellent so that mosquito doesn't bite us. तो हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए during rainy season? We should keep our surrounding clean, we should wash our hands, we should not eat from outside vendors, yes, street vendors. Then you should get rid of stagnant waters and we should always use mosquito repellent. Okay children? Yes. Now see, again there are some precautions you should take during rainy season. Okay, you should not eat outside. Then if you get wet in the rain, आपको घर आके वापस से shower लेना है. You should always wash your hand before eating. Then you should eat hot and healthy soup. You should always wash hands. Then you should use mosquito repellent. Yes, yes. And you should always drink boiled or filtered water. Again, look here. आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना है ड्यूरिंग रेनी सीजन. क्यों? क्योंकि जर्म्स का खतरा बहुत बढ़ जाता है. देन यू शुड ऑलवेज बॉयल दी वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, या फिर फिल्टर वाटर पीना चाहिए. देन व्हेन यू गेट वेट इन रेन, जब आप बारिश में भीग जाते हो तो घर आके यू शुड टेक अ शावर. यू शुड ऑलवेज यूज मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे टीचर ने पहले भी बताया. Then always remember you should wash your hands before eating. You should always wash your hand before eating. कुछ भी खाने से पहले आपको हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए. Okay children? Yes. So these all the precautions you should take. अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप कभी भी इल नहीं होंगे. Okay? कभी भी इल मतलब you will be healthy. Now, see again, just look here. This is one more precaution that you should take for rainy season. You should not let water accumulate. कहीं पर भी पानी नहीं जमा होना चाहिए. And do not allow children to play near the stagnant water. यानी जहाँ पानी बहुत सारा है, जमा हो गया है, आपको वहाँ नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज होते हैं. Then look here, you should never eat uncovered food in ड्यूरिंग मानसून, यानी जब भी बारिश हो, आप जहाँ बाहर खुला खाना मिल रहा हो आपको नहीं खाना चाहिए. सी हियर, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आपको हमेशा साफ सफाई करना चाहिए. देन यू शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर. आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए. देन यू शुड वॉश योर हैंड्स एंड देन you should always boil water before drinking. Okay children? Now children, we should always take care of ourselves during all these seasons. Yes, yes, we should always try to keep ourselves strong and healthy. So we studied about summer season, we also studied about rainy season, we also studied about the precaution, the care we should take during these two seasons. So the next season which we will learn, I think you can very well guess the season. Yes, the next season is the winter season. Yes, children? Yes. Now see, you can see a beautiful scenery on your screen which is of winter season. Yes, yes, you can see a boy waving his hand wearing winter clothes, then a girl making a snowball in winter season. Yes, yes. Then you can also see a snowman. Yes, yes, Christmas tree houses and the whole ground is filled with the snow, the beautiful snow. Yes, yes.
So this is a winter season. Then in again another picture, you can see people warming themselves in front of the fire so that they do not feel cold, they feel warm. Yes or no? आप भी ये करते ही होंगे winter season में. Yes, to keep ourselves warm in winter season. Yes, yes, you can see they are all surrounding the fire so that they feel warm. This is also a winter season's scenery. Okay. Now children, now you can see various winter clothing that help us to keep warm during winter season. Yes, yes. Now children, look here. You can see the beanies or the winter caps which you wear on your head. Then sweater, gloves, jacket, jeans, mittens, scarves, socks, long sleeve top, long coat, jacket, trench coat, boots, earmuffs, cardigan and trench coat. Now there are various winter clothes which help us to keep warm. हमें बहुत सारे कपड़े विंटर में पहनने चाहिए. जैसे समर में हम थोड़े कम कपड़े पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं, so that we keep our body cool. Yes, but during winter हमें हमारी बॉडी को वार्म रखना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे कपड़े पहनेंगे. ओके, so these are the clothes which we wear during winter seasons to keep our body warm. Yes, yes. So children, now how should you wear clothes? Now अगर आपको हल्की ठंडी है then you should wear 1 or 2 clothes, a long layer, then the outer layer and warm shoes. जब हल्का ठंडा और जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो आपको 2 से 3 कपड़े पहनने चाहिए. Yes, you should always wear gloves and 1 or 3 layers. Then you should wear boots that should be waterproof. Then a warm hat. जब हल्का ठंडा हो तो आप 2 या 3 लेयर कपड़े पहन सकते हो. लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो तब आपको क्या करना चाहिए, आपको वार्म हैट पहनना चाहिए, आपको 3 से 4 लेयर कपड़े पहनने चाहिए. यस और नो? देन यू शुड वेयर ग्लव्स, यू शुड वेयर वाटरप्रूफ बूट्स. देन व्हेन देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगे तब आप क्या करेंगे, हम 3 से ज़्यादा कपड़े पहनोगे, यानी 4-5 क्लोथ्स यू विल वेयर वार्म हैट, यू विल ऑल्सो वेयर अ फेस मास्क. यस, यस. Then you should always wear 1 outer layer to keep out of the wind. Yes, yes. Then you should wear boots also and you should also wear gloves. Then what should you do during winter season? आपको धूप मिले तो धूप में चलना चाहिए. Yes, you should be active, you should exercise. Yes, then you should इंक्रीज योर इम्यूनिटी. आपने पहले ही पढ़ा है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, हमें फूड खा के, अच्छी फूड खा के. देन यू शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर. एंड आपको हेल्दी डाइट भी रखनी चाहिए. हेल्दी डाइट जैसे आपने पढ़ा ही है, हेल्दी डाइट में यू शुड इंक्लूड ऑल दी 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दोज आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस एंड चपाती, डेयरी, yes, and pulses. Yes, yes. Now children, what did we learn today? We learned about seasons. Which 3 seasons? Summer, winter, monsoon. Yes, yes. During winter season we should wear lots and lots of clothes and we should keep our body warm. Yes or no? Yes, we learned about the winter clothing. Yes, yes. Then this is the winter season. Then we learned about the rainy season. Yes, yes. We also learned about the precautions which should be taken during rainy season. Like we should wash hands, we should keep our surrounding clean, we should not eat from outside. Then we saw various clothes that we use during rainy season. Yes. Then children, what did we learn? We learned about the summer season. Yes. Then we learned what should we do to help ourselves
during summer season. Yes? Yes. So children, we learned about summer season, that it is very hot during summer season. Okay, so this is all for today children. We learned about the seasons. Okay, have a nice day children.